to give the answer of the few questions. Now our first question is, what is bleaching powder? So out of these, which will be the correct answer? You have to tick it. Yes, it is calcium oxychloride. That is B answer is the correct one. So answer is B. Next we will take the next question. Now plaster of Paris. Now plaster of Paris is actually prepared from the gypsum. So it is calcium sulfate hemihydrate. That is D answer is the correct answer. Similarly, next question. Now lime react with salt. Now which salt will be formed? We have to tell which salt along with it will form. It is NaCl. Lime will react with this NaCl and we will get. So our answer is D. Next, let us see what is the question. We are given the test tubes A, B, C, D and E and we are using the universal indicator. और यूनिवर्सल इंडिकेटर जब हमने यूज़ किया तो उनका पीएच लेवल हमारे पास क्या आया? 4, 1, 11, 7 और 9. अब हमने इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इनमें से जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है. अब जैसे ए का ये है आंसर, बी ने ये शो किया, सी ने ये शो किया, डी ये है हमारा और ई ये है. अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पे कि हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होगा जिसका पीएच क्या होगा? दैट विल बी 7. So our correct answer is D. Okay. Now what is strongly alkaline? We have to tell. Now strongly alkaline means which has a pH greater than 7. Now 9 after C is the greatest number. So pH having the 11 is the correct answer. That is C. Now what is strongly acidic? Which has the pH 1. So pH 1 belong to the solution which is in the B test tube. Similarly weak acid. Weak acid will be less than 7 pH, that is 4. So A is the weak acid. And weakly alkaline solution will be which is the greater than 7 but less than 14, we can say that is pH, it is 9. So we are having E is the correct answer. So with the help of these we can easily indicate universal indicator which solution is alkaline and which is basic or acidic. I think you are able to understand. Now let us take another question. We are having the fresh milk. Now its pH is 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? तो अगर वो कर्ड के जो है उसमें चेंज हो जाता है तो नेचुरली जो है कि कर्ड क्या है? It is acid. So what will happen? Its pH will decrease. pH of the milk will decrease and lies between 5 to 6. Okay, so it will be because the which acid is present? Lactic acid is present in the curd. Is it clear? Next we are having why the milkman adds a very small amount of baking soda to the fresh milk. वो जो है ये क्यों करता है कि बेकिंग सोडा किस लिए डालता है फ्रेश मिल्क में? आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में दूध के अंदर जो है दूध वाले जो है अक्सर डाल देते हैं. तो कारण क्या है वो हमने बताना है. एक्चुअली क्या है कि मिल्क जो है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए वो
वो स्पॉइल होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कर्ड फॉर्म, सो इट विल बी एसिडिक विल बी देयर, एसिडिक नेचर हो जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करता है, बेकिंग सोडा डालता है। बेकिंग सोडा इज विच इज एल्कलाइन इन नेचर, माइल्ड एल्कलाइन है, it neutralize the acidic effect. So to preserve the food, preserve the milkman mostly add baking soda. Is it clear? Now, why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वो इसलिए कर देता है to avoid its spoiling. और why does this milk take a long time to set as a curd? तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए टाइम क्यों लगता है? क्योंकि मिल्क जो है आपके पास, मिल्क जो है वो जो है आप उसका जो pH होता है that is has a is 6, तो उसको जो है स्लाइटली अल्कलाइन से एसिडिक कन्वर्ट करने के लिए जो है हम जो है क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं ताकि जो है वो एक सेट हो जाए एज ए कर्ड।